So hello class, welcome back to the heat transfer chapter, and we already have gone through the conduction. Now our focus will be convection. So as you can see, I have filled up my blackboard with lot of information. Let's sort it out. Get to the center, my dear students. A huge cap lock is written convection. What is convection? Again we will take up an example of an apple. I have to transfer that apple to my student sitting at the back bench. What I am going to do is that I am going to go myself and go to the last bench and give that apple to that boy. So what I am doing? I am actually moving to get that apple transferred from my seat to the boy sitting at the back. Now this is what happens in convection also. It is a method of heat transfer which happens maximum times in liquids and gases where the movement of molecule is occurring. So one thing, the movement of molecule is there, and number two thing, the liquids and gases which are bad conductors of heat, then in that case they are transmitting heat with this method. So when the liquids and the gases they heat up, कोई भी लिक्विड और गैस का मॉलिक्यूल अगर हीट हो रहा है, हॉट हो रहा है, गर्म हो रहा है, सो इट विल, हॉट मॉलिक्यूल विल एक्सपैंड, विल बिकम लाइट एंड विल राइज अप. अब मैं कहाँ पे बोल रही हूँ? मैं इस बादल के नीचे लिखी दो लाइन जिसके नीचे महामंत्र लिखा हुआ है, आई एम रीडिंग दोज लाइन्स. Yes, my dear students, this particular Mahamantra will be carried in your chapter Thunder and Storms, right? So we are going to understand this particular concept, and this is the only concept we have to understand. Hot molecule expands, becomes light and rises up. The opposite happens with a cooler molecule. Cooler molecule, it contracts, becomes heavy and comes down. तो जो गर्म होगा वो फैल जाएगा, वो हल्का हो जाएगा और वो उड़ जाएगा, और जो ठंडा होगा वो सिकुड़ेगा. जैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, ठंड सिकुड़ते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, the molecules will come closer, it will become heavy and will come down, right? So arrow up, arrow down. So you have understood the definition, what is the definition of convection and the Mahamantra for convection. Dear students, we have seen all this in our daily lives, and that is why after this concept, we utilize this concept in our applications, which is in room heaters, ACs, chimneys, ventilators and so on. Now where naturally I have seen it? I have seen it naturally in sea breeze and the land breeze. Sea breeze में दिन के समय land becomes hotter than sea. क्योंकि the land has a habit, it heats up quickly and it cools down also quickly. But water takes time to heat up and water takes time to cool down. You know the molecular concept is there. तो दिन के समय कन्वेक्शन पे आते हैं वापस से. दिन के समय ड्यूरिंग द डे द लैंड बिकम्स हॉट देन सी. भाई जमीन गर्म हो गई और सी अभी ठंडा ही है, उसको टाइम लगेगा गर्म होने में. सो एयर अबव द लैंड बिकम्स हॉट एंड इट विल राइज अप. अब वहां से हॉट एयर एक्सपैंड हो गई, राइज हो गई और उसने वो जगह छोड़ दी. एन एम्प्टी स्पेस इज क्रिएटेड देयर. Now this empty space, nothing is left empty in this nature, so it will be filled up by the cooler air from the sea. So what is happening? जब हवाएं समुद्र से लैंड की तरफ चलनी शुरू हो जाएंगी, this movement of air from sea to land is called sea breeze. The opposite happens in the land breeze. Now what happens in the land breeze? At night, see I have drawn a moon. At night the water is still hot, क्योंकि उसको तो टाइम लगा गर्म होने में और ठंडा होने में, but land has cooled down faster. तो who is hot? The sea is still hot. तो air above the sea, air above the water is still hot, so it will become light. महामंत्र याद करिए, it will become light,
it will expand and will rise up. Now जो पानी के ऊपर की हवा है वो तो गायब हो गई, वो तो उड़ गई. Now that creates an empty space. This empty space will be filled up by the air from the land. Now since the air is moving from land to sea, that is why it is called the land breeze. तो रात के समय अगर समुद्र में आप नाव लेकर मच्छी पकड़ने बैठे हैं तो रात के समय आपको हवाएं अपनी तरफ आती महसूस होंगी फ्रॉम द लैंड. यू आर इन द सी फिशिंग and you will get air from the land. This is called land breeze. So what is the Mahamantra? Again you will see the Mahamantra is hot molecule expands, becomes light and rises up. Now this application we have used at our places in room heaters. Like room heaters ज़्यादातर हम कहाँ रखते हैं? रूम हीटर्स हम घर में नीचे की तरफ रखते हैं, फ्लोर की तरफ रखते हैं. So they are placed at lower levels because when the air molecules close to the floor gets heated up, it will rise up, cooler air will come down and eventually this whole continuous process will be happening. Now what happens in air conditioners? AC में तो हमें ठंडी हवा चाहिए तो हम AC को कहाँ लगाएंगे? ऊपर रूम के टॉप पे लगाएंगे, टुवर्ड्स द सीलिंग लगाएंगे. तो वहां पे गर्म हवा होगी, ये उसे ठंडा करेगा. मॉलिक्यूल्स विल बिकम कोल्ड, दे विल बिकम हेवी एंड विल कम डाउन. वेंटिलेटर्स कहाँ होते हैं? कमरे के ऊपर बदबूदार हवा निकलनी हो तो खिड़कियां होते हैं, खिड़की के ऊपर एक पोर्शन होता है रेक्टेंगुलर सा, दैट इज कॉल्ड वेंटिलेटर. सो हर घर में वेंटिलेटर्स बनाए जाते हैं ताकि घर की गर्म हवा ऊपर जो चली गई है वो उस वेंटिलेटर के रास्ते चली जाए. And this helps in the movement of air molecules nicely. Chimneys, again chimney का क्या रोल है आपको पहले ये समझना है. तो you will find out what chimney is, how chimney is showing the convection. और घर पे अगर convection को देखना है तो एक छोटा सा काम करिएगा. आज आपको ये होमवर्क दे रहे हैं. आप एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें 1 कप पानी डालेंगे and just put warm this water and put tea bags into it, 1 tea bag into it, and you will see the color of tea bags, the color coming out from the tea bag. From top to bottom it is going to revolve, right? So this is a very simple easy experiment we can do at home also, and this is the convection. I hope you have understood this whole concept. महामंत्र भूलिएगा नहीं.